So students, today we are going to take care of the complete discussion of the synopsis of waves. We will go in three slots. We will start with sound waves, followed by wave motion, followed by stationary waves. The synopsis which is being given to you, obviously it is keeping in mind all the students, that is PCM also. So in this there will be one extra article which is Doppler effect. Doppler effect is not there for me. Secondly, sound waves and wave motion, there are some topics repetitive. Right? So when I wrote the synopsis of this, some part was written keeping in mind 11th standard, some part was keeping in mind 12th standard. So some pages are repetitive, those pages you will cancel. I'll give you the reference also, where it is. Now the first part, wave motion. मैं जो points बोलते जाता हूँ, discuss करते जाता हूँ, वो आपने अपने notes में tick करते जाओगे. Wave motion is the mode of transfer of energy from particle to particle of the medium without the actual migration of the particles. For example, I am talking to you. It's a sound wave. So what must be happening? Sound waves need material medium. That means they need air, they need water, they need steam. They cannot pass through vacuum. That means if some bangs are happening on the surface of the moon, we cannot hear them. Reason, outside the earth, up to 400 kilometers there is atmosphere. After that there is vacuum, right? And moon is about 360,000 kilometers away from us. So after 400 kilometers, what is happening that we can't understand. So sound needs material medium. So they are called mechanical waves. Now how the medium should be? When I am talking to you, surrounding air gets modified into alternate compressions, rarefactions, compressions, rarefactions, compressions, rarefactions. When I start speaking in 3 dimensions, everywhere around me, right? That means when I start speaking, the medium is overlapped by this and the wave is coming to you, but the medium is not coming to you, the medium is coming back to me. And then it is ready to take the next wave. Because if the medium also goes and doesn't come back, that means it is fatal for me to speak. Reason, I start speaking something, the wave travels, compression, rarefaction, compression, rarefaction. Medium, because it is elastic in nature, it comes back to me. If the medium was not elastic, the medium also gets displaced. And the moment medium gets displaced surrounding to me, there is vacuum. So after few seconds of my speech, you will be able to see my lip movement, but you will not be able to hear, because surrounding to me now there is vacuum. And after a few more seconds, even I will fall down, I will faint. Reason, I cannot survive without oxygen. So the conditions for wave motion to take place is: 1. The medium should be elastic in nature. 2. The medium should have inertia, because if the medium is having inertia, you know that means the medium possesses material medium. That means it can store energy in the form of half mv square or mgh or any form of energy, electromagnetic energy. And then it should have minimum frictional resistance. Minimum frictional resistance in the sense, right now medium between you and me is air. Density is 1.29 kilogram per meter cube. Now suppose you are swimming underwater. Density is 1000 kilogram per meter cube. And I say, time out, come on, time up, swimming pool is going to be closed, come out. So you'll be able to hear me, but not with the comfort level with which you can hear me right now. Reason, the resistance offered by air to the sound is much lesser compared to the resistance offered by water to the sound. I am not talking about the speed, mind. In fact, about sound waves, it is exactly behaving ulta. Light moves fastest in vacuum, little slower in air, further slower in water, very slow in glass. That means light moves fastest in vacuum and slowest in solid medium. Whereas sound is going to be fastest in solid medium, slower in liquid, slowest in gas, and then it is not going to pass through vacuum. There is a reason for that, we are coming to that. So most important is, what is wave motion? It is the mode of transfer of energy from particle to particle of the medium without the actual migration of the particles. It is something like this. It is something like this. You have to be on time. I really don't like this. I seriously don't like this. Next time take care, otherwise don't you dare to knock the door. Chalo. Now suppose I say, give this to the last bench student. Give this to the last bench student. Look at his attitude. I told him to give this to the last bench student, but he himself did not get up. This is what is actually speaking happening in wave motion. That means the wave is passing on the energy from particle to particle of the medium.
right? But the particles themselves are not migrating. So these are all particles, right? And this is the wave, this is energy. That means the energy is transferred from particle to particle of the medium without the actual migration of particles. It is exactly like heating a solid rod. When I heat a solid rod, okay, this is the rod. I'm holding the rod from here and I'm putting this on flame. So what happens is this portion of the rod is getting energy. They start vibrating more vigorously. They pass on heat energy from neighbor to neighbor. After some time, I feel warm, right? That means the energy is transferred, but the particles themselves are not transferred. This is called conduction. Convection में ऐसा होता है कि the material medium also is getting transferred. Is that clear? So this is the first page of your synopsis. Page F1. मैंने first point cover किया, second point cover किया. Start. किन महान आत्माओं के पास ये नोट्स नहीं है? नेबर के नोट्स में से पढ़ो. तीनों के पास नहीं है. वेरी गुड. जरा बोरो करो. मुझे चालू रिकॉर्डिंग में ये सब बोलना नहीं होता है. तुम लोगों को ये पता होना चाहिए. नयन सर का लेक्चर अनाउंस हुआ है. नयन सर क्या करने वाले थे लेक्चर में, है ना? ये ऑलरेडी मैं सिनॉप्सिस दे चुका था, तो पता होना चाहिए कि सर डिस्कस करने वाले थे. ठीक है, ध्यान से पढ़ो. घर पे जाके एकदम ध्यान से पढ़ना. टुडे आई एम गिविंग यू 2 papers, one comprising of 60 MCQs and other comprising of 45 MCQs. ये सब मेरे नेक्स्ट लेक्चर के पहले सॉल्व करके आना. चलो, रिवाइज फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट. Revise first point and second point. फर्स्ट 2 points हो गया. Total focus on the board. The next points. Now when the wave is transferred to the medium, when the particles are transferring energy from particle to particle of the medium, suppose this is the particle on mean position. This is at the completion of one wave. This is the completion of one more wave. I am selecting a particle randomly over here, which is not at the completion of a wave. Then distance is x. Distance is x, first coordinate. It is at some instant of time, so it is t. This is called space time. Space time. और ये जो मैंने highlight किया, this is y. This is y, and y means displacement. तो ये particle का displacement क्या हुआ? 0. ये particle का displacement क्या हुआ? 0. ये particle का displacement क्या हुआ? 0. Right? Displacement is 0. Displacement may repeat, but distance will never repeat. ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? A, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? A. ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? A. राइट? माइनस साइन इंडिकेट दैट इट इज ऑन द अदर साइड. लेकिन मैक्सिमा ही हुआ ना ये भी. राइट? दिस इज कॉल्ड क्रेस्ट, दिस इज कॉल्ड ट्रफ, दिस इज कॉल्ड क्रेस्ट, दिस इज कॉल्ड ट्रफ एंड सो ऑन. इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट रिपीट हो सकता है, but distance will never repeat. It is something like time का value repeat हो सकता है, but time never repeats. If it is 1:45 p.m. right now, 1:45 p.m. tomorrow also it will be 1:45 exactly after 24 hours, but the date will be changed on the calendar. No, that means the time which is gone never comes back. Time का value repeat हो सकता है, but time repeat नहीं हो सकता. Displacement repeat हो सकता है, लेकिन distance कभी भी repeat नहीं होगा. This distance is lambda. This distance is 2 lambda, right? Because this is length of the wave. So now we are studying different parameters of the wave. What is wavelength? It is distance between 2 consecutive crests, or 2 consecutive troughs, or 2 consecutive compressions, or 2 consecutive rarefactions, or between any 2 successive points which are in the same state of vibration. मतलब अगर ये मैंने crest पे लिया है, falling crest पे, तो मुझे प्रीवियस फॉलिंग क्रेस्ट पे या तो नेक्स्ट फॉलिंग क्रेस्ट पे सेम लोकेशन लेना चाहिए.
ये मैंने आप लोगों को ऑसिलेशन के टाइम पे बोला था, x is a sin omega t, now answer is here, right? Now answer is x is equal to a sin 0. Now answer is that x is equal to a sin 30. तो sin 150 पे भी मैं उधर ही हूँ, sin 30 sin 150, जाने वाला आने वाला, राइट? तो भले वो वैल्यू सेम है a/2, लेकिन मेरा डायरेक्शन सेम नहीं है, मतलब डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, then they are said to be in the same state of oscillation. So can I call this also as lambda? Can I call this also as lambda? तो ये हो गया space wise periodicity, space wise regularity. It is called space period, and space period is called lambda. What about time period? Regularity in time, is it going to be capital T? Yes or no? So now I can talk about phase difference. Now I can talk about phase difference. Phase, space. Next, phase, time. If the phase is phi and if the space is lambda, then can I say this is exactly 2 pi? Right? And therefore if it is in general some distance, say x, then what is phase? Will my answer be 2 pi x by lambda? Will my answer be 2 pi x by lambda? So this is called phase in terms of space. And what is this? Phi, which is going to be 2 pi when it is exactly one wave completed. Then at some intermediate instant of time, chota t, what will be phase? Will my answer be 2 pi chota t by bada t? 2 pi chota t by bada t. Now, this particular value is a constant value, right? And this is called k. This is called k. K is called propagation constant. What is it called? Propagation constant. This is called propagation constant. Likewise, 2 pi by t is constant, and therefore I can write phi as omega t. So this is called angular frequency. This is also constant. Are you getting this? Can I say therefore, for a given wave, wave velocity is constant? Because what is wave velocity? Wave velocity is displacement upon time, या तो it is frequency into wavelength. So can I say for a given wave, wave velocity is constant? But what about particle velocity? Particle velocity, memory recall chapter oscillation. It is omega root of a square minus, उधर x square बोलते थे आप लोग, इधर गलती से भी x square नहीं बोलने का, because x means distance now, displacement is y, so you should say y. Yes, everyone. Now can I say y is going to be different for particle to particle? इसका y 0 है, अगर इसका y 0 है मतलब ये टर्म 0 है, मतलब ये पार्टिकल का वेलोसिटी मैक्सिमम है, ये पार्टिकल का y is equal to a, right? So this will be a square minus a square, that means this will be 0, exactly oscillation wala funda. So can I say these particular velocities are going to be 0, these particular velocities are going to be highest, and intermediate, can I say the velocities will differ from 0 to a omega. Can I say for a given wave, wave velocity is fixed and particle velocities are going from particle to particle. So over here the most popular question comes, what is the ratio of maximum particle velocity to wave velocity? So can I say V max is equal to a omega and V wave is f lambda? That means can I say this is a 2 pi f upon f lambda, f gone, and therefore it is 2 pi a by lambda. So can I say this is ka, because k मैंने अभी बोला, propagation constant. अच्छे से समझ में आया? Sure. This is page F1, third point. बाकी सारी जो definitions है, displacement, amplitude, time period, frequency, wave velocity, वो already हम लोग oscillation में कर चुके थे. तो इसके साथ साथ में मैंने कौन सा definition किया मैं बोलता हूँ. Page F1 का third point read करो. When I give you time to read the points, read them very, very carefully. Because it's a big chapter, right? And we are covering everything in one go. Page F1, third point.
पेज F1 के बॉटम पे आप ये लिखोगे, पेज F1 के बॉटम पे आप ये लिखोगे, V max upon V wave is A omega upon F lambda, यहाँ तक लिखोगे ना। जिन महान आत्माओं के पास नोट्स नहीं है, अगर आप बुक में लिखो, घर पे जाके ये सब लिखो। Page F1. Understood. Page F1, point numbers 1, 2 and 3 done. Simultaneously check. Simultaneously check. Are you now on? Are you now on? Page H82. H82. Okay, पहले पेज H80 देखो, H80 पॉइंट नंबर 1 डन, पॉइंट नंबर 2 डन, पॉइंट नंबर 3 डन। मैंने बोला ना साउंड वेव्स में और वेव मोशन में कुछ कुछ पॉइंट्स रिपीटेटिव होगा, तो ये टिक करो। राइट, पॉइंट नंबर 4, classification of waves. Apply common sense. Those waves which need material medium are called mechanical waves, and those waves which do not need material medium are called electromagnetic waves. Those waves which travel through the medium are called progressive waves, and those waves which are confined between two fixed points. Example, I am playing guitar, so there is one end point of the string of the guitar and there is another end point. The wave goes, reflects back, goes, reflects back. It is confined between two fixed points. Or else I am taking a stone and I am dropping that stone in a bucket containing water. Bucket, it's a closed boundary, small boundary, definable boundary. So the ripples are formed. Then they will strike the boundary, they will come back. Again gone, again come back. If I think about ocean waves, they are progressive because they don't have chance to reflect. They just go on and on and on and on and on. Whereas these waves go, they come back. They go, they come back. If you think about tidal waves, they go, they slide back. So new waves are coming and these waves are sliding back. So there is formation of stationary waves or standing waves. So the waves which travel in the medium are called progressive, and the waves which are blocked between 2 points are called stationary. So you are on point number 4. Mechanical waves done, electromagnetic waves done, transverse waves and longitudinal waves you know. Transverse waves are those in which the particles of the medium vibrate perpendicular, whereas longitudinal waves are those where the particles vibrate parallel. Transverse waves में the medium gets divided into alternate positive and negative maxima known as stress centers. Longitudinal waves में there are compressions and rarefactions. Particles come very close, they go away. They come very close, they go away. So where they come close, they are called compressions, and where they go away, they are called rarefactions. Point number 4 tick करो. Point number 5 tick करो. Now you are on page H81. Point number 6 tick करो, progressive wave. Point number 7 tick करो, stationary wave. Point number 8 tick करो, harmonic equation. ये हम लोगों ने oscillation के start में किया था. When any mathematical equation is having sine function or cos function, it is called harmonic equation. Point number 9 tick करो. Have I drawn the diagram of the wave? Now what are the definitions associated with this diagram? Amplitude, maximum displacement of the oscillating particle. Wavelength, distance between two consecutive crests or two consecutive troughs, or 2 points which are in the same state of vibration.
Then time period, time taken by the particles to complete one wave. Frequency, number of waves completed per unit time. Wave number, number of waves completed per unit time is called frequency, and number of waves completed per unit length is called wave number. 1 by lambda, 1 by lambda. अभी जो उधर मैंने लिखा ना, path difference of lambda is equivalent to phase difference of 2 pi is equivalent to time difference of t. ये वेव्स के कोई भी चैप्टर में यूज होता है. साउंड वेव्स होने दो, लाइट वेव्स होने दो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होने दो, प्रोग्रेसिव वेव्स होने दो, स्टेशनरी वेव्स होने दो. सो याद कैसे रखने का? whenever exactly one wave gets completed, exactly length covered is exactly lambda, time taken is exactly period, okay, and therefore 2 pi is equivalent to lambda also, and 2 pi is equivalent to t also. So when exactly one wave is completed, phase covered is 2 pi, space covered is lambda, time covered is t. अभी इसको मैंने दो पार्ट में स्प्लिट किया. लैम्बडा के लिए 2 पाई तो x के लिए कितना, लाइकवाइज t के लिए 2 पाई तो छोटा t के लिए कितना. दिस इज पीरियोडिक टाइम, दिस इज इंस्टेंटेनियस टाइम. स्मॉल t इज योर चॉइस, कैपिटल T is fixed for a given wave. Small x is your choice where you want to take the reading. Lambda is a fixed value. This is called phase in terms of space, and this is called phase in terms of time. अभी कहीं ना कहीं पे वो आएगा. ये पॉइंट नंबर 9 तक आ गए हम लोग. 10th तक अभी तक हम लोग पहुंचे नहीं हैं. 10th तक पहुंचे नहीं. आई एम सुपर श्योर 11th point you can understand. I am super sure. Check this. Do we know k is equal to 2 pi by lambda? Can I rewrite this as 2 pi by lambda upon t? Numerator is omega and denominator is v, wave velocity. Here you are. So can I say k, which is propagation constant, is angular velocity upon linear velocity? It is angular velocity upon linear velocity. मतलब 11th point हो गया, right? अब आप वापिस एकदम फर्स्ट पेज पे जाओगे. पेज F1 डन, okay? Page F1 done. Page F2 is completely knowledge based. Page F2. What do you mean by mechanical waves? What do you mean by non-mechanical waves? What do you mean by transverse waves? What do you mean by longitudinal waves? What do you mean by progressive waves? What do you mean by stationary waves? अभी बोला कि ये सब के बारे में मैंने. Yes or no? Non-mechanical waves means material medium is not required. Example electromagnetic waves. Example light waves. Example X-rays. Example photons. Right? Those who require material medium, best example is sound wave. Right? So point number 4 का sub point A tick करो, sub point B tick करो. If you see sub point B, the waves are categorized as per the vibrations. Transverse waves में the particles of the medium vibrate at right angles, whereas longitudinal waves में they vibrate at parallel direction. उसके बाद में article C is progressive wave and stationary wave. टिक करो, हो गया. Then one dimensional waves, two dimensional waves and three dimensional waves. One dimensional waves means they move in one direction. Example oscillation. 1/4, 1/2, 3/4, 1. तो पेंडुलम कैसे जाता है? 1/4, 1/2, 3/4, 1. ये कभी भी ऐसे नहीं जाता है 1/4, 1/2, 3/4, 1. Let me have change in life. 1/4, 1/2, 3/4, 1. No, it goes either this way or this way, one at a time, or this way. Spring pendulum. So they are one-dimensional waves. Circular waves, or there is something called Lissau's figure, which is not there for you. Figure of 8. It is called figure of 8. They are planar waves or two-dimensional waves. And three-dimensional waves means I am talking to you right now. Sound waves travel in all the directions, right? About polarization of light, we say that vibration of the waves in or movement of waves in one particular direction, right? Plane polarized. Light can be transverse waves can be polarized. Longitudinal waves cannot be polarized. So that is the meaning of one-dimensional. So now I want you to put a tick mark on article D. उसका 1, 2, 3 तीनों सब पॉइंट्स हो गया. मैटर वेव्स का मतलब डीप ब्रॉय वेव्स. लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन mv. उसमें पार्टिकल नेचर भी आता है, वेव नेचर भी आता है. When fast moving electrons are studied, you know that the corresponding wavelength with electron is given by 12.27 upon root of v angstrom unit. I am sure आप लोगों ने ये फॉर्मूला एकदम अच्छे से सुना है. Lambda is h upon under root
twice my path to KEM. Yes or no? My path to KEM means this is kinetic energy, this is mass of the particle, and this is wavelength associated with the particle. That means it is double nature, mass nature also, wave nature also. So जहाँ पे आर्टिकल D लिखा हुआ है ना, वहाँ पे आप लिखो for example de Broglie waves, de Broglie wavelength. Physics में हम लोग इसको de Broglie बोलते हैं. The correct pronunciation is de Broglie. Okay, de Broglie wavelength. So that was article E. So page F2, 2 minutes for you. Go through A, B, C, D, E. एक एक लाइन ध्यान से पढ़ते जाओ, the way you read NCERT book, और टिक करते जाओ. Page F2, A, B, C, D, E. Done. Done. Keep going on. In between, will you be able to? Hello. In between, will you be able to pause the video? Stop मत करना please. पूरा recording करा हो गया. Pause करना. जब मैं बोलूँगा. हाँ? Continue. Have you come up to E? Now there are three basic types: audible, infrasonic, and ultrasonic. The word sonic means sound waves. Audible range for human brain is 20 Hz to 20,000 Hz. Right? Human brain can understand this. Less than that, that is less than 20 Hz, is heard by snakes. That means underground creatures or animals or whatever you say, frogs and all that. And ultrasonic is heard by bats. Right? That is the frequency is more than 20,000 Hz. Then there is the word hypersonic. The frequency is more than 100 megahertz. And then there is the word supersonic. ध्यान से सुनो, चार words है ना, infrasonic, sonic, ultrasonic, and hypersonic. They are in accordance with frequency. The last word supersonic is in accordance with speed of sound. Right? If something goes faster than speed of sound, then that is called supersonic. For example, fighter jets. There is a word called Mach speed. There is a word called Mach speed. Mach speed का मतलब होता है the object is going faster than sound, and it is defined as ratio of velocity of object upon velocity of sound. Right? And this ratio has to be more than 1. This ratio has to be more than 1. You can say more than or equal to 1. For example, if velocity of object is exactly equal to velocity of sound, that means the object is going with speed of sound. For example, a fighter jet is going with 1 Mach speed. That means it is going with the speed 332 meters per second, which is approximately about 1100 kilometers per hour. Because when we convert kilometers per hour to meters per second, it is 5 by 18. So when we convert meters per second to kilometers per hour, it is 18 by 5. 18 by 5 is 3.6. And I am talking about 3.6 into 332. 36 threes up is 108. So this answer will be around
between 1100 and 1200 kilometers per hour. That is 1 Mach speed. Fighter jets usually are in the range of 2 Mach speed to 5 Mach speed. Very, very fast. Okay, so 4 words are in accordance with frequency: infrasonic, sonic, ultrasonic, hypersonic. Supersonic word is in accordance with speed of sound. Be careful please. अब वहाँ पे हाइपरसोनिक दिया है कि नहीं दिया है मुझे नहीं मालूम है, नहीं दिया है। तो एक काम करो, पेज F2 के बॉटम पे नीचे इनफ स्पेस है, वर्ड ऐड करो हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक का मतलब है frequency is more than 100 megahertz. Frequency is more than 100 megahertz. That means this is in accordance with frequency. Next word is supersonic. Supersonic. उसके लिए लिखो velocity of the object is more than velocity of sound. Velocity of object is more than velocity of sound. अब नीचे एक नोट लिखो छोटा सा. First 4 words are in accordance with frequency. First 4 words are in accordance with frequency, and the last word means supersonic. Last word is in accordance with speed. Okay. With this point number 4 done. Tick karo. With this point number 4 done. Completely done. Are we now on page F3? Mach number. अभी बोला मैंने. Mach speed या तो Mach number. When something goes faster than sound, it is called Mach number. The formula is velocity of source upon velocity of sound. Mach number हम लोग तभी बोलते हैं when something is going faster than sound, and therefore we say that Mach number is more than or equal to 1. Obviously इसका कोई unit नहीं होगा because it is the ratio of two velocities. So Mach number done. Point number 6, I am super sure you know this from the chapter oscillation. Don't we know different definitions like amplitude, frequency, wavelength, wave number, wave pulse. Series of waves is called wave train. Everybody, अगर एक wave लिया और मैंने ऐसे identical suppose 500 waves लिए, then it is called wave train. अगर मैंने पूरा wave नहीं लिया और उसका एक छोटा सा part भी लिया, या तो crest या तो trough, सिर्फ छोटा सा part लिया, right? Suppose I take only this much of wave, then that is called wave pulse. Usually we take this wave pulse in echocardiogram and all that, right? Doctors will check the peaks. If the doctor finds some irregularity in your echocardiogram, then you will be advised to go for angiography, angioplasty, right? And then accordingly they will judge if there is some problem in your artery or not. So first will be echocardiogram, then angiography, if required angioplasty. Point number 6 done. Page F3 done. I hope you are comfortable with the speed. Page F4. Wave function you know. Wave function का मतलब होता है equation should be in terms of space and time. Example x is equal to a sin omega t plus alpha. Example y is equal to a sin omega t minus 2 pi x by lambda. I am coming to those wave equations. Wave front आप लोगों ने light के chapter में सुना है. Yes or no? It is locus of all the points vibrating in same phase. That is called wave front. Different types: spherical wave front, plane wave front, cylindrical wave front. The normal drawn to the wave front is called wave normal. Harmonic wave हम लोगों ने किया हुआ है. What is the meaning of harmonic wave? Equation में sin या तो cos आना चाहिए. Propagation constant मैंने किया अभी k is 2 pi by lambda बराबर. Wave velocity मैंने किया, ये देखो इधर है, k is omega by v, so v is omega by k. Correct? Phase हम लोगों ने oscillation chapter में किया था. State of oscillating particle is called phase. And phase is a vector, mind you, उसमें magnitude और direction दोनों necessary है. When I say x is equal to a sin 30 and when I say x is equal to a sin 150, मेरा x का आंसर सेम आता है, a by 2 because sin of 30 and sin of 150 are same.
But one is particle starts from mean and goes to positive extreme, and other is particle starts from extreme and it is coming back to mean. That means direction is important. एक में आपका ट्रेन बांद्रा से बोरीवली जा रहा है और बीच में गोरेगांव आ रहा है, और एक में आपका ट्रेन बोरीवली से बांद्रा जा रहा है और बीच में वापस गोरेगांव आ रहा है. मतलब गोरेगांव दोनों टाइम पे आ रहा है, लेकिन जाते वक्त आ रहा है कि आते वक्त आ रहा है. You are going towards North Bombay कि you are going towards South Bombay. That is the meaning of phase. Intensity, I am super sure you know this. Intensity is directly proportional to amplitude square also and frequency square also. ये बेटा अपना पूरा रिवीजन चल रहा है, तो आई एम श्योर मुझे एक एक फॉर्मूला डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. Yes or no? Then there is something called threshold intensity and threshold of pain. Human brain can tolerate the decibel values from around 1 decibel to 120 decibel. Right? After 120 decibel, if the noise levels go, it is called noise pollution. It is disturbing pattern for your brain, and it is disturbing vibration for your auditory nerve also and tympanic bone also. So that is calculated using a law which is called Weber's law, right? And this Weber's law is loudness is K log I, right? And this is calculated as 10 log to the base 10 I. और ये जो वैल्यू है, this is 10 log 10, 10 is to minus 12, right? मतलब ये हम लोग जब I upon I naught लिखते हैं तभी. This is basically K log I upon I naught, where I naught is the basic intensity of sound, and then we substitute these values. This is 10 log I upon 10 is to minus 12 I. So I goes, this 10 is to minus 12 goes up, it becomes 10 is to plus 12. And then this is of the type log of A raised to B is B log A. That means this is 10 into 12 into log of 10 to the base 10. Log of any number to the same base is always 1. Okay, and therefore your answer is 120 decibel. This is talking about intensity of sound. अभी तक हम लोग जो words use करते थे, infrasonic, sonic, ultrasonic, they were talking about frequency of sound, and this is talking about intensity of sound. So you need to just remember the final values. One is human ear can hear the sound up to intensity of 10 is to minus 12. Okay? उसके बाद में सामने के पेज पे कहीं पे तो होगा Weber's law. Yes, it is point number 9. लाइन से जाते हैं. पहले हम लोग फिलहाल पॉइंट नंबर 6 पे है, 6 पे. उसका सब पॉइंट नंबर 14 और 15 टिक करो. एनर्जी डेंसिटी वर्ड आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी सुना है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक वर्ड सुना है, मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया. dF upon ds is equal to sigma square upon 2 epsilon naught k, which is half k epsilon naught e square also. जब मैं फोर्स अपॉन एरिया लिखता हूँ, and if I multiply and divide by x, then numerator becomes fx, which is work, which is energy, and denominator becomes area into x, which is volume. That is called du by dv, energy available per unit volume. So it is a similar word. If you check formula number 13 and formula number 14, they are same. ये दोनों formula का simple meaning ये है कि intensity is directly proportional to square of amplitude and is directly proportional to square of frequency as well. So page number F4 done. Page number F4 done. Are we on page F5? The word echo. अभी echo के लिए ना स्टूडेंट के दिमाग में बैठ जाता है कि the distance should be 17 meter, right? Distance मतलब मत करो, because एक बार क्वेश्चन ऐसे आया था कि on a particular planet, speed of sound is 500 meters per second. Mind you, on Earth it is 332 meters per second at NTP. It was some other planet, right? तो इसमें 17 meter आंसर नहीं था, आंसर was 25 meter. Now see why. Speed is equal to distance upon time. That means distance is equal to speed into time while going and while coming back. So it is written as d by t while going and d by t while coming back. Therefore, for echo, can I say velocity can be written as d by t while going and d by t while coming back? That means it is 2d by t. And therefore, the distance ka restriction, distance constraint to understand echo is vt by 2. अर्थ के लिए
This speed we take it as round figure, 340 meters per second, 332 to be more precise, but we take it as 340 because the surrounding temperature most of the times is not zero. We take it as around between 15 degrees Celsius to 25 degrees Celsius. So this is 340. This is persistence of sound for human brain, 1/10 of a second. Whatever you hear, the effect of that remains on your brain for 1/10 of a second. Whatever you see, the effect of that remains on your brain for 1/10 of a second. So if something goes faster than that, your brain is confused. So this is 340 into 1/10, which is 34 upon 2. लेकिन ये आंसर 17 सिर्फ अर्थ के लिए होता है. So rather than mugging up the value, better to remember the formula, right? The formula is for echo it should be Vt upon 2. वहाँ पे देखो एक formula दिया है, T is 2D upon V. तो सर उसको आप लिखो D is equal to Vt upon 2. मतलब अगर कि और कोई प्लेनेट के लिए भी अगर ये क्वेश्चन आया, still you can practice. Okay? रिवर्ब का मतलब होता है the effect similar to echo, लेकिन उसमें डिस्टेंस का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है. अभी फॉर एग्जांपल मैं कीबोर्ड बजा रहा हूँ, तो उसमें एक फंक्शन होता है रिवर्ब का. मैंने एक की प्रेस किया और बाद में मैंने की प्रेस करके नहीं रखा हुआ है, मैंने अपना फिंगर हटा लिया, फिर भी वो थोड़े टाइम के लिए वो साउंड सस्टेन होता है, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड. दैट इज कॉल्ड रिवर्ब. दैट इज कॉल्ड रिवर्ब. अब ये पियानो में ये क्लासरूम में बजा रहा हूँ, ऑब्वियसली ये डिस्टेंस 17 मीटर नहीं है. 17 मीटर से तो बहुत ही ज्यादा कम है. 17 मीटर इज अबाउट 55 फीट, right? 1 foot is 3.333. Okay, so reverb is the effect similar to echo, but that distance restriction is not there. Echo का मतलब होता है distance between the source of sound and the obstacle should be minimum 17 meter. It goes and then it comes back. But if you play some instruments like guitar, electronic guitar, piano, keyboard, etc., so there electronically these functions are given, where even if you lift your finger, the sound is still heard by brain. That is reverb. Reverb टिक करो, 8 पॉइंट टिक करो. अभी 8 पॉइंट में उधर लिखा हुआ है आपके बाजू में, देखो रिफर पॉइंट नंबर 26 एंड 27. दैट मींस दे आर आल्सो अबाउट रिवर्ब. अभी आपके सिलेबस में रिवर्बरेशन है, लेकिन रिवर्बरेशन टाइम निकाल दिया उन्होंने कि हाउ टू कैलकुलेट दैट टाइम. और एक दूसरा फॉर्मूला है Sabines formula. Sabines formula is specifically used to design the theaters, auditoriums, because वो बहुत बड़े बड़े होते हैं. अभी मान लो आप NMACC जाते हो, या तो भाईदास जाते हो, या तो षण्मुखानंद हॉल जाते हो. षण्मुखानंद हॉल का कैपेसिटी अबाउट 3000 पीपल. NMACC का कैपेसिटी उससे भी ज़्यादा है. तो उसमें एक स्पेशल वे में वो थिएटर डिजाइन होते हैं. साइड में देयर आर साउंड एब्जॉर्बर्स, अदरवाइज द आर्टिस्ट इज परफॉर्मिंग, राइट? कॉन्स्टेंटली यू नो द आर्टिस्ट इज सिंगिंग द वर्ड्स. पता चला इंसिडेंट वेव तो आ ही रहा है, राइट? प्लस एको इफेक्ट की वजह से वो रिफ्लेक्टेड वेव भी आ रहा है. दैट मींस योर ब्रेन इज कंफ्यूज्ड. यू आर हियरिंग द सेकंड सेंटेंस, यू आर हियरिंग द फर्स्ट सेंटेंस, राइट? सो ऑल दिस थिंग्स हैव टू बी एब्जॉर्ब्ड. सो द थिएटर्स आर डिजाइन्ड इन अ स्पेशल, देयर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ सिस्टम कॉल्ड डॉल्बी स्टीरियो सिस्टम, राइट? अब जैसे आप धूम 1 या तो धूम 2 जैसी कोई मूवी देखोगे, राइट? या तो सपोज कोई भी फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज देखोगे जिसमें गाड़ियाँ जा रही आ रही है, पता चला यहाँ का स्पीकर ऑन है, इसको एकदम मस्त सुनाई देता है बाइक का फायरिंग. बाद में जैसे जैसे वो बाइक मूवी में आगे बढ़ती है ना, सो ऑडियो ट्रैक्स एंड साउंड ट्रैक्स, आई मीन साउंड ट्रैक्स एंड वीडियो सिग्नल्स आर सो नाइसली सिंक्रोनाइज्ड कि बाद में वो स्टूडेंट को लगेगा कि बाइक मेरी तरफ आ रही है, और इसको लगेगा, इसको फील होगा कि बाइक मेरे से दूर गई, राइट? बाद में वो बाइक टर्न लेती है तो पता चला वो कॉर्नर वाले स्टूडेंट को लगता है हाँ बाइक मेरी तरफ आ रही है. सो दैट दिस आर स्पेशल काइंड ऑफ साउंड इफेक्ट्स. ओके, पॉइंट नंबर 9 हो गया अपना लाउडनेस ऑफ साउंड, वेबर्स लॉ. पॉइंट नंबर 10 में ध्यान से एक वेव देखो. डज इट लुक लाइक अ यूनिफॉर्म वेव? सो दैट इज कॉल्ड वॉइस सिग्नल. इट क्रिएट्स प्लीजिंग इफेक्ट ऑन योर ब्रेन. बट लुक एट 11th one. Is it a distorted wave? So this is called noise. Unpleasant voice is called noise. That means the pattern is not uniform. Unpleasant voice is noise. ये पॉइंट समझा सबको? Now comes pitch and quality. Now both these words go with frequency, but one is helping you to understand sharpness of the sound, and one is helping you to understand identifying the sound. For example, pitch of sound. Over here I've got set of tuning forks. Okay, and on this tuning forks you will see there are some tuning forks which are small in size,
This is small in size and this is larger in size. You can see that. तो इसमें मटेरियल कम है, मतलब ये पार्टिकल्स को वाइब्रेट होने का चांस ज्यादा है. Can you hear that sound? Right? Now this will produce different frequency ka sounds. Okay, we are coming to this also. This is called diatonic scale. मतलब मास जितना ज्यादा वाइब्रेशंस उतना कम. किसी के पास मेटल स्केल है? Anybody having metal scale by any chance? Oh, fantastic. Now I am taking this metal scale and I am going to keep this part locked and this part is going to vibrate. Check the sound. Right? अब ये मैंने मास इतना लॉक कर दिया था, अब मैं इतना मास लॉक कर रहा हूं और इतने को सिर्फ वाइब्रेट होने दे रहा हूं. वाइब्रेशंस हैव इंक्रीज्ड. अभी मैं इतने मास को लॉक कर रहा हूं और सिर्फ इसको वाइब्रेट होने दे रहा हूं. चेक दिस. ये वीडियो में नहीं आएगा, नो प्रॉब्लम. अब ये देखो, अब ये देखो. This is how the sound tones are decided, and this is the universal language of music. You may not understand German, you may not understand Spanish, right? But when an artist is playing piano, their way of saying it is different. C, D, E, F, G, A, B, C. Our way of saying it is different. Sa, re, ga, ma, pa, da, ni, sa. Right? Italian music is do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Style is different, but the language of music is common. You may not understand the lyrics, but you may enjoy the melody, right? So that is as per diatonic scale. Now pitch और quality में क्या फर्क है? Suppose there are 2-3 people talking outside, 2 males and 3 females. So when a male starts walking, your brain understands that this is masculine voice. When the female starts talking, you can understand, right? Masculine voice is dull because this portion, the vocal cords are thick. In males, the vocal cords are thick. In stationary waves, we have a formula F is 1 upon 2L root of T by mu. When you solve it, it comes as 1 upon 2LR root of T by pi rho. That means frequency is inversely proportional to radius. Frequency is inversely proportional to length. यही हो रहा था ना, जब मैं ज्यादा लेंथ ले रहा था तो फ्रीक्वेंसी कम था, और जब मैं कम लेंथ ले रहा था तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा था. The number of vibrations were increasing. So in females the vocal cords are thin, and in males the vocal cords are thick. In females this portion is flat. In males this portion is protruding, larynx box. So inside you have got vocal cords also, which play the role of strings, and inside you have got pipe also, wind pipe, which is playing the role of open pipe and closed pipe, stationary waves. Right? So masculine voice and feminine voice you can easily make out. That is as per quality. That is as per quality. And now further quality में क्या? Suppose there are 3 males only talking outside. Myself, Mahesh sir and Satyen sir. अब ये तीनों voices आपने सुनी हुई है, तो आपको स्पेसिफिकली पता चलता है कि ये नयन सर की वॉइस है. आपको स्पेसिफिकली पता चलता है कि ये सत्येन सर ने बोला. Is that clear? So pitch is talking about sharpness of sound. Sometimes barking dog may not be that irritating. Buzzing bee may be more irritating. Buzzing mosquito may be more irritating. Are you getting this? Because buzzing bee or mosquito will be surprised. The wings vibrate for more than about 20,000 times more than that per second. Right? Wings vibrate so many times. Inside your watch, there's quartz crystal. And this quartz crystal vibrates approximately 3 crore plus times in 1 second. That vibrational energy is given to the hands of the clock, and that is how the hands move. So the vibrational energy is converted into mechanical energy. So one is pitch of sound and other is quality of sound. Pitch of sound means you can understand it is a dull sound or sharp sound. नीचे वाला sound, dull sound. The masculine voice is dull, feminine voice is sharp. This is a normal singing range for anybody, everybody.
Bathroom singers also can have this limitation. When you go with high pitch notes, it is very difficult. Example Dalal Mehndi, example Arijit, example Rahat Fateh Ali Khan. Very difficult to sing these notes. Lower notes, Jagjit Singh, then old time singers, Hari Haran and all that. Veteran singers can cover all this. Shankar Mahadevan, Sonu Nigam, वो कीबोर्ड का एक रेंज से दूसरे रेंज तक जाता है, राइट? सो दैट इज टॉकिंग अबाउट क्वालिटी और टिम्बर. पिच का मतलब शार्पनेस और डलनेस, एंड क्वालिटी मतलब यू कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई दैट. अभी एक आर्टिस्ट पियानो पे सपोज नेशनल एंथम बजा रहा है, एक गिटार पे बजा रहा है और एक गाना गा रहा है, तो आपको पता चल रहा है कि ये पियानो की आवाज़ है, ये गिटार की है और ये सिंगर है. सो दैट इज क्वालिटी. ओके, पॉइंट नंबर्स 12 and 13. 12 and 13. Around 1 minute for you. Revise. Point numbers 12 and 13. Revise. Both these words are dealing with frequency, mind you. But one is dullness and sharpness, and one is quality of sound. That means three males talking, but you can identify whose voice is this. अभी जैसे आप मूवीज देखते हो, आपने ऋतिक रोशन की मूवी देखी है, सलमान खान की मूवी देखी है, शाहरुख खान की मूवी देखी है, अमिताभ बच्चन की मूवी देखी है. अभी मैं आपको सिर्फ वॉइस ट्रैक सुनाता हूँ, सारे मेल वॉइसेस ही है. मैं बोलता हूँ आइडेंटिफाई द वॉइस, तो यू कैन इजीली डू दैट because you have heard them frequently. Point number 14, note. It is a name given to any musical sound. For example, we are going to talk about fundamental note, second harmonic, third harmonic, fourth harmonic and so on. Tone का मतलब every component of musical sound. अभी day to day life में हम बोलते हैं ना कभी कभी, मुझे आपका बात करने का टोन पसंद नहीं आया, right? You were sounding rude. So that is tone. Note, tone. बाद में एक वर्ड है टोनिक. टॉनिक, टोनिक, स्पेलिंग से टॉनिक, टोनिक. टॉनिक is medicine. Tonic is fundamental frequency. So sometimes if they want to confuse you, in place of the word fundamental, they will say the tonic of this particular musical instrument is 256 hertz. तो tonic मतलब basic note. Note, tone, fundamental, टिक करो. ओवरटोन्स का मतलब होता है एडिशनल फ्रीक्वेंसीज. ओवरटोन का मतलब होता है एडिशनल फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल. अभी फॉर एग्जांपल मैं एक म्यूजिकल स्केल गा रहा हूँ, सा रे गा मा पा रे सा गा नी गा मा गा रे सा सा 256 सा फाइनल बेल 256 फाइनल बेल फंडामेंटल सेकंड हाफ. समझा? अभी उसके बीच में जो फ्रीक्वेंसीज आते हैं वो एग्जैक्ट मल्टीपल्स नहीं. सा इज 256, रे इज 288, गा इज 320, my is 341.3, right? Pi is 384 and so on. That means they are higher frequencies than fundamental. अगर मैं 256 को fundamental मान के चलता हूँ तो ये frequency से उससे higher frequencies है, लेकिन उसको मैं double, triple, 4 times ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, right? So there is one golden sentence: all overtones are harmonics, right? All harmonics are overtones. Sorry, all harmonics are overtones. But all overtones need not be harmonic. अभी जैसे सेकंड हार्मोनिक को मैं फर्स्ट ओवरटोन बोलता हूँ, थर्ड हार्मोनिक को सेकंड बोलता हूँ, अलग अलग सिस्टम में उसका अलग अलग मीनिंग है, राइट? इट इज समथिंग लाइक all South Indians are Indians, but all Indians need not be South Indians. All periodic motions need not be simple harmonic. Simple harmonic is periodic, but periodic need not be simple harmonic. It may be UCM also, right? Overtones word समझा, टिक करो. 17 पॉइंट आइए. Are we on harmonics? Yes, check. I was talking about this. For example, I am playing guitar. The first harmonic is 256. The second harmonic is double of this. That is 512.
The third harmonic is triple of this, 768, and so on. Fourth harmonic is 1034, right? So ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ ये देखो एग्जांपल, frequency of a note is suppose 128 hertz, then 256, 384, there are multiples, integral multiples, double, triple, 4 times and so on. हार्मोनिक वर्ड अंडरलाइन करो. टोनिक मैंने अभी बोला. म्यूजिकल इंटरवल, इंडियन म्यूजिकल स्केल, डायटोनिक स्केल, वेस्टर्न म्यूजिकल स्केल, इटालियन म्यूजिकल स्केल, ये सब कुछ मैं एक साथ में कवर कर रहा हूँ. ध्यान से सुनो. नोट साइड में रख दो, कंसंट्रेट. डायटोनिक स्केल or otherwise Indian musical scale, this is in perfect accordance with the tuning forks which I was trying to show you. Okay, these tuning forks are exactly 7 in number and they are sa re ga ma pa dha ni as per Indian music system. As per Italian music system they are do re mi fa sol la si, and as per European music they are C D E F G A B. इनका frequency value fix रहता है. As per Indian music, if I write sa re ga ma pa dha ni, right? Then the next one which I write is sa के ऊपर dot. इसका मतलब होता है higher frequency. अगर ये frequency 256 है, अगर नहीं है ही, then this frequency is 512. Now this frequency is 288. This frequency is 320. This is 341.4. This is 384. This is 420. This is 480, and so on. So this frequency is exactly double of this frequency, right? So this is called an octave higher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8th musical note is double the first. So octave का मतलब होता है double. If I write सा के नीचे dot, तो फिर ये frequency 128 होना चाहिए. This is an octave lower, right? अगर मैं पियानो बजा रहा हूँ और साथ साथ में मैं दूसरा कोई आर्टिस्ट गिटार बजा रहा है और सेम म्यूजिकल नोट्स बजा रहा है, then they are said to be in unison. Unison का मतलब होता है same frequency. Unison का मतलब होता है ratio of frequencies is 1:1. Octave word का मतलब होता है F1:F2 is 1/2 या तो 2/1. 1 किसका octave है उसके ऊपर डिपेंड करता है. अगर मैं इसको F1 बोलता हूँ और इसको F2 बोलता हूँ, तो F2 is double of F1. राइट, लेकिन मैं इसको F1 बोलता हूँ और इसको F2 बोलता हूँ, तो F1 is half of F2. So कौन किसका ऑक्टेव है वो डिपेंड करता है आप किसको क्या नाम दे रहे हो. Yes or no? Thereafter there are 3 tones. One is called major tone, other is called minor tone, and other is called semitone. ये नंबर्स आप एक्जैक्टली कैलकुलेटर में फीड करोगे ना तो ये रेशियो आएगा. When you take sa, re, ga, ma, pa, dha, ni. When you take this ratio is 9/8. When you take this ratio is 10/9. When you take this ratio is 16/15. Then again when you take this ratio, this is 9/8. When you take this ratio, this is 10/9. When you take this ratio, it is 9/8. Next ratio is 16/15. इसका सीक्वेंस बहुत इजी है. दिस इज मेजर, माइनर, सेमी, मेजर, माइनर, मेजर, सेमी. याद रखने का टेक्निक देता हूँ. इफ दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 3. 1 2 3 1 2 1 3 1 2 3 1 2 1 3 1 2 3 1 2 1 3. Right? Or otherwise you can remember it like this. मा, मी, सा. Right? मामी, मासी, ये वर्ड एकदम कॉमन है ना अपने डे टू डे लाइफ में. सो MA मतलब माँ, मेजर टोन. MI मतलब मी, एंड सेमी को आप सा बोल सकते हो. तो मामी, मा, या तो ऐसा ही ले लो. मामी सी, मामी मासी, मामी सी, मामी मासी. Right? Because the rarest of rare this question is, but if they really want to ask something where the rank is decided, they may ask this. Is that clear? So the ratio of two consecutive frequencies in diatonic scale is called major tone, minor tone, semitone, unison, and octave. Unison मतलब frequencies must match. Octave मतलब frequencies double. Major tone मतलब ratio of frequencies is 9/8. 9/8 is 1.125.
10 by 9 is 1.111, 16.15 is 1.0 something something something, right? So the ratio goes this way: 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3. 9 by 8, 10 by 9, 16 by 15, 9 by 8, 10 by 9, 9 by 8, 16 by 15. Is that clear? So I have got 3 points together. I have got point number 20, I have covered point number 21, I have covered point number 22, I have covered point number 24, I have covered point number 25, point number 26 cancel करो, point number 27 cancel करो, point number 28 cancel करो. हाँ, अभी 5 पॉइंट साथ में पढ़ो. Point number 20, 21, 22, 24 and 25. और अगर समझ में आ गया है तो टिक करो खाली. समझ में आ गया तो don't waste your time reading this. When you go home, revise all this very very nicely. Before you start with multiple choice questions, revise this very very nicely. Shall we proceed? So, now velocity of sound in air. Velocity of sound was calculated first by all-time great Newton. There was a little flaw in his calculations, so it was corrected by Mr. Laplace. Velocity of a transverse wave is given by under root t by mu, and velocity of a longitudinal wave is given by under root e by rho, where e का मतलब होता है elastic constant. Elastic constant in your syllabus, you got there are 3 types. One is Young's modulus, next is bulk modulus, next is rigidity modulus. Young's modulus is related to length, bulk modulus is related to volume, and rigidity modulus is related to shape. Right? Now we are talking about velocity of sound in air. Velocity of sound in air. तो air के लिए Young's modulus नहीं लिख सकते हम लोग. Young's modulus is defined in terms of length. Air does not have length. You cannot even use eta because eta is used for shape. Air does not have shape also, but air can have volume. So Mr. Newton used this as k by rho. अब ये k के भी 2 types है. One is ki and another is ka. ki का मतलब होता है isothermal bulk modulus और इसका मतलब है adiabatic bulk modulus. Isothermal bulk modulus is pressure of the medium. And adiabatic bulk modulus is gamma times pressure. फिर इसके भी 3 types है. Monoatomic, diatomic, polyatomic. Chapter kinetic theory of gases. Article degrees of freedom. Article degrees of freedom. This is 1.66. This is 1.4 and this is 1.3. Gamma. This is the ratio of Cp and Cv. Article specific heats of gases, specific heat at constant pressure upon specific heat at constant volume. Now what mistake Mr. Newton did? So this was velocity calculated by Newton. He said that it is root of E by rho, therefore it is root of Ki by rho. That means it is pressure of the medium upon rho. Because you are talking about velocity of sound in air, pressure at NTP is 101300 and density of air is 1.29. So when he substituted these values, his answer was coming as 280 meters per second, which was a serious mistake because practical live answer was coming at around 330. If there is an error of 1 or 2 meters per second here and there, it is still understandable. But this mistake was huge. So Mr. Laplace, his thought process was when sound is passing through the medium, because he compared his own theory with this theory. He suggested corpuscular theory of light also, where corpuscles move very very fast, right, in the range of around 10 raised to 8 meters per second. He could not give the exact speed, and this is going in a 3-digit value. So he thought this is a very slow change, and very slow change means compressions and rarefactions will get enough time to exchange heat. Compression is a crowded place, rarefaction is a scattered place. So here the temperature is more, here the temperature is less. According to Newton, when sound wave is passing through the medium, the compressions and rarefactions must be getting enough time to exchange heat. So he thought this is isothermal change. Now Laplace suggested the correction, taking his own argument. Ki, sir, you are saying one side that it's a isothermal change and it's a slow change.
but you are only getting the answer as 280 meters per second. And 280 meters per second is not slow. 280 meters covered in 1 second, it cannot be slow. So he said that, sorry sir, you should not use Ki, you should use Ka. So velocity calculated by Laplace was under root Ki के बदले Ka times upon rho. Now this Ka, as you see, is gamma times P. So this is under root gamma P by rho. अब इसमें से root of P by rho तो already Newton calculate कर चुके थे, right? This answer was 280. So this is root of gamma times 280. We are talking about velocity of sound in air, right? Air is 78% nitrogen, 21% oxygen. That means diatomic gas. Diatomic gas मतलब मुझे 1.4 लेना चाहिए. So this is multiplied by root of 1.4. अब hypothetically सोचो, अगर ये 1.44 होता, तो इसका root 1.2 होता. 280 into 1.2 is 336, right? So when you go for exact value, this answer is coming as 331.8 meters per second, which was in perfect agreement with the calculated velocity of sound. Means when sonometer experiment was performed, when Mendel's experiment was performed, when resonance tube experiment was performed, when all these experiments were performed to calculate velocity of sound, this answer was correct, this answer was wrong. So this is called Laplace's correction to Newton's formula. Now, what are the factors which can affect velocity of sound? As temperature increases, velocity of sound increases. I hope I don't need to go in depth of this. For every degree rise in temperature, velocity of sound increases by approximately 0.6 meters per second. So when temperature increases, velocity of sound increases. When humidity increases, humidity increases मतलब air becomes lighter. इसका मतलब density कम हो जाता है, तो velocity बढ़ता है. Example, somebody is performing this experiment in Mumbai and somebody is performing the same experiment in Jaipur. One is closer to desert area and we are closer to sea face. So our air quality is moist, there the air quality is dry. So both the observers, when they perform exactly the same experiment with the same set of instruments, with the same parameters, with the same accuracy, यहाँ का और वहाँ का आंसर सेम नहीं आएगा. इसका मतलब as moistness increases, velocity of sound increases. So as temperature increases, velocity of sound increases. As humidity increases or moistness increases, velocity of sound increases. And as pressure changes, velocity does not change. क्योंकि अगर pressure बढ़ता है, तो सामने as per P equal to 1/3 rho C square, rho भी बढ़ता है. So P by rho ratio remains constant. So there is direct proportionality with humidity and temperature, and there is no dependence on pressure. I repeat, velocity of sound increases with increase of temperature. Velocity of sound increases with the increment in the humidity or moistness, and velocity of sound is not affected by pressure of the medium, right? So this is every possible thing about sound. Read that page extremely well. Page number F8 is very, very, very important for sound. Usually problems come on this. Usually problems come on this. Page F8, super important for sound waves. Can we pause the video for some time? Pause. Stop नहीं करना, please. Unlike light, why sound moves faster in solids? For example, if you think about light moves fastest in vacuum, then little slow in air, further slow in water, very slow in glass. Sound में उल्टा है. Sound moves fastest in aluminum rod or steel rod. It becomes slow in water. It becomes very slow in air, and it cannot pass through vacuum. Now there was an argument कि V is equal to under root E by rho. बराबर? Density of solids is greater than density of liquids, is greater than density of gas. For example, if I take steel rod, density is about 8,000 kilogram per meter cube.
If I take water, density is about 1000, and if I take air, density is about 1.29. If I take oxygen, density is about 1.44. If I take nitrogen, density is about 1.25. Right? So अगर ये reason है फिर तो ये उल्टा होना चाहिए. Velocity is inversely proportional to rho. But you cannot concentrate only on rho. You have to concentrate even on elastic constant. So elastic constant is also found to be greater than solids, so greater in solid, then liquid, then gas. अब ये तो बहुत ही ज्यादा था value wise. मतलब density of solid is greater than liquid is greater than gas, agreed. But elastic constant of solids is much greater than liquids, is much greater than gas. This was of the order of 10 to 11. This was of the order of about 10 to 8. And this was of the order of about 10 to 5. याद करो बेटा, atmospheric air pressure is 1.013 into 10 to 5. Right? So, out of these two, elastic constant was more dominant. And therefore, numerator decides, not the denominator. ये sequence भी यही है, ये sequence भी यही है. So, if you don't look at this sequence, you might feel कि sir, velocity is inversely proportional to root of rho. तो अगर ये sequence है तो फिर velocity उल्टा होना चाहिए. No. You can establish relation between two physical quantities provided the third one is constant. Over here, third one also is not constant. So numerator is predominant compared to denominator, and therefore velocity of sound in solids is greater than in liquids, is greater than in gas, and sound waves cannot pass through vacuum because they are mechanical waves. They need some material medium. So this was about point G. This was about page 8. F8 point G. Page 9 अपना हो गया. Page 9 हो गया. We are starting with second chapter now, that is wave motion and Doppler effect. Doppler effect नीट के students को नहीं है, तो title में से Doppler effect word निकाल दो. Point numbers 1, 2 and 3 done. Page H80 done. Point number 4, 5, 6, 7, 8 done. Page H81 is done. Point number 9 is done. Please let me know. Are you aware of all the different styles of writing simple harmonic progressive wave? Are you aware of all this? Everybody, y is equal to a sin omega t plus alpha में a sin omega t alpha is for initial phase and this is minus 2 pi x by lambda. ये मालूम है सबको? There is a phase lag. ये word मालूम है सबको? So this is first equation. This is first style of writing simple harmonic progressive wave. The second style of writing it is a sin omega की जगह पे मैं 2 pi by बड़ा t लिख सकता हूँ, छोटा t as it is minus 2 pi by lambda लिख सकता हूँ. This is x. बाद में मैं 2 pi common ले सकता हूँ. So this is a sin 2 pi common. छोटा t by बड़ा t minus x by lambda. This is the second style of writing equation of simple harmonic progressive wave. Second style. The third style is y is equal to a sin 2 pi 1 by t को मैं लिख रहा हूँ f. ft minus x by lambda. This is the third style of writing it. Fourth style of writing it is y is equal to a sin 2 pi. Frequency को मैं लिख सकता हूँ speed upon wavelength times t minus x by lambda. 1 by lambda common ले सकता हूँ. That means y is equal to a sin 2 pi by lambda bracket vt minus x. Right? So if you observe all these questions carefully, ये सब में x और t आना ही चाहिए. Because it is like where is the particle and when is the particle there. So we say that wave motion is doubly periodic. It is periodic in space also and it is periodic in time also. Its space period, as we have mentioned previously, is lambda, and its time period, as we have mentioned earlier, is t. Right? Then, do we say that 2 pi by bada t is omega and 2 pi by lambda is k? इसका मतलब ये इक्वेशन में ऐसे भी लिख सकता हूँ. This is omega t and this is kx. That means the last style of writing the equation is y is equal to a sin bracket omega t minus kx. Omega t minus kx. 1, 2, 3, 4, 5. Your first answer is in terms of omega and lambda. Your second answer is in terms of
t and lambda. Your third answer is in terms of frequency and lambda. Your fourth answer is in terms of v and lambda. And your last answer is in terms of omega and k. So all these are different styles of writing simple harmonic progressive wave. Your problems come on this. If the wave is traveling along positive x direction, positive x, inside the bracket minus sign will come. And if the wave is traveling along negative x, then inside the bracket positive sign will come. One is called phase lag, other is called phase lead. ये मालूम है सबको? नहीं मालूम है? जिनको नहीं मालूम है, try to understand. ये वेव है, ये वेव है. अब ये पार्टिकल सबसे पहला पार्टिकल है, यहाँ से वेव शुरू है. सपोज आई एम प्लेइंग गिटार, ये फर्स्ट पार्टिकल है. जब तक इसका एक साइकिल खत्म नहीं होता, इसको एनर्जी नहीं मिल सकता है, राइट? अब जब सेकंड वाला पार्टिकल को एनर्जी मिला और उसने वाइब्रेट होना शुरू किया, इसने एनर्जी थर्ड वाले को दिया, तब तक ये ऑलरेडी एक वेव और खत्म कर चुका है. दैट मींस व्हेन दिस कंप्लीट्स वन वेव, right, 2 has completed 0 waves and 3 has completed 0 waves. When this completes 2 waves, अभी देखो इसने एक वेव खत्म किया तो 2 ने एक भी नहीं, 3 ने एक भी नहीं. इसने एक वेव खत्म किया मतलब इसने और एक खत्म कर लिया होगा, इसने एक भी नहीं. बाद में इसने एक वेव खत्म किया मतलब इसने एक और, इसने एक और. It is exactly like this. Suppose you are 16 years old right now. Suppose you have younger brother who is 14 years and you have elder brother who is 18 years, right? अब जब ये पैदा हुआ था, आप पैदा ही नहीं हुए थे, और आपका यंगर ब्रदर भी पैदा नहीं हुआ था. जब ये 2 साल का हुआ तब आप पैदा हुए थे, अब ये पैदा नहीं हुआ है. जब ये 4 साल का हुआ तब आप पैदा हुए थे और आपके 2 साल कंप्लीट हो चुके थे और लास्ट में पैदा हुआ है. That means can I say the eldest one is always 2 years ahead of the middle one, is always ahead of 2 years of the youngest one. Is that very clear? So if I take this direction, there is a phase lag, there is a phase lead. ये पार्टिकल वाइब्रेशन में इससे पीछे है कि आगे है? X से. So when the waves travel along positive x direction, इधर माइनस साइन होता है, राइट? अभी मैं खाली शिफ्ट ऑफ ओरिजिन कर देता हूँ. ये मैंने डायरेक्शन ऐसे ले लिया, ये ऐसे जा रहा है, तो there is a phase lead. Is that clear? ध्यान रखने का कि पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन किधर आ रहा है, ध्यान रखने का. ध्यान से देखो, इधर नेगेटिव साइन आया, इसका मतलब क्या हुआ? दे आर टॉकिंग अबाउट द फेस. अगर इधर माइनस साइन आया ना, तो इसका मतलब ये ऐसे नहीं था, ये ऐसे था. अगर इधर कॉस आया तो ये ऐसा नहीं था, ये ऐसा था. अगर इधर माइनस कॉस आया तो ये ऐसा था. ये सुनो, लेकिन जा रहे चारों के चारों पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, बराबर? तो चारों के चारों, what is this function? Sin. What is this function? तो वो माइनस साइन में इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इधर आएगा बाहर. yes or no? एक एंगल के अंदर है और एक साइन के बाहर है. एक साइन के अंदर, एक साइन के बाहर है. जो साइन के अंदर है वो फेस के बारे में बात करते हैं, और जो साइन के बाहर है वो एम्पलीट्यूड के बारे में बात करते हैं. इज इट वेरी क्लियर? श्योर? तो उधर जो मैंने 5 इक्वेशंस लिखे ना, ए बी सी डी ई, उसके बाजू में कमेंट लिखो. All these equations are for a wave traveling along positive x direction. All A, B, C, D, E are the equations for a wave traveling along positive x direction. Right? एक दो कमेंट और लिखना, तो थोड़ा स्मॉल हैंड राइटिंग में लिखना प्लीज. ओके, और अगर लिख लिया है तो फिर एकदम नीचे बॉटम ऑफ द पेज यूज करो. नेक्स्ट नोट, if the wave is traveling along negative x direction, if the wave is traveling along negative x direction, then inside the bracket, before the term of x, plus sign should come. Before the term of x, plus sign should come.
Before the term of x, plus sign should come. Yes or no? Now you will stay there and you are going to draw 4 graphs. एक ग्राफ होगा साइन फंक्शन का, एक ग्राफ होगा माइनस साइन फंक्शन का, एक ग्राफ होगा कॉस फंक्शन का और एक ग्राफ होगा माइनस कॉस फंक्शन का. Will you be able to do this or I'll draw this and show it to you? Will you be able to do this? चलो ड्रॉ करके बताता हूँ. What is this graph, students? What is this graph? Sine. What is this graph? Minus sine. What is this graph? And what is this graph? Right? This is displacement versus time का graph. So this is of the type x is equal to a sin omega t. This is of the type x is equal to minus a sin omega t. This is of the type x is equal to a cos omega t. And this is of the type x is equal to minus a cos omega t. चारों चलेगा. The wave is traveling along positive x की negative x. मतलब ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन आएगा, उल्टा याद रखिएगा. If the wave is propagating along positive x, inside the bracket before the term of x, everywhere minus sign will come. And if the wave is traveling along negative x, then plus sign will come. समझा? Point number 11 तक आ गए आप लोग? Okay, 12th is reverberation. Repeat. पिक करो. Reverberation किया हम लोगों ने. अभी ध्यान से देखो बेटा, पूरा पेज 83 कैंसिल करो, कट करो. रीजन इट इज रिपीट पेज F5. ये ऑलरेडी मैंने साउंड वेव्स में सिखाया. क्या होता है ना, हम लोग जब 11th और 12th में ये चैप्टर स्प्लिट करके पढ़ाते हैं ना, तो 11th वाला पार्ट स्टूडेंट्स कभी कभी भूल जाते हैं, तो 12th के सिनॉप्सिस में हम ये वापस देते हैं. इफ यू सी दिस इज सेट ऑफ 3 चैप्टर्स, साउंड वेव्स, वेव मोशन एंड स्टेशनरी वेव. पेज H83 कट किया, आर्गुमेंट लिखा, रिपीट पेज F5. पेज 84 कट करो, 84 कट करो, बोलो रिपीट पेज F6. ये भी सिखा दिया मैंने. पेज H85 का यू कट एवरीथिंग बिफोर द आर्टिकल ऑफ बिट्स. बिफोर द आर्टिकल ऑफ बिट्स मतलब पॉइंट नंबर 21 रहने देना. पॉइंट नंबर 21 रहने देना. राइट? अभी बिट्स मालूम है सबको. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिट्स? मैं 3 आर्टिकल साथ में लिखता हूं, ध्यान से सुनना एकदम. आई एम टेकिंग 3 चैप्टर्स टुगेदर नाउ. ऑसिलेशन, वेव मोशन एंड स्टेशनरी वेव. खाली इक्वेशन ध्यान से देखो और बाद में जजमेंट लो. x1 is equal to a1 sin omega t plus alpha 1 and x2 is equal to a2 sin omega t plus alpha 2. Are they 2 SHMs? Yes or no? If 2 SHMs superpose with each other, हम लोगों को आंसर मिला था कि combination of 2 SHMs is SHM. याद आया? ये मैं अभी लिखूंगा बाद में. Our next article is this chapter now. Phenomenon of bits. If 2 simple harmonic progressive waves, if 2 simple harmonic progressive waves, एक का इक्वेशन है y1 is equal to a sin 2 pi f1t and y2 is equal to a sin 2 pi f2t plus 0. राइट? अभी ध्यान से देखो, इनका क्या सेम है और क्या सेम नहीं है. इनका एम्पलीट्यूड सेम है, इनका फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है और इनका अल्फा सेम है. इनका एम्पलीट्यूड सेम नहीं था, इनका फ्रीक्वेंसी सेम था क्योंकि ओमेगा सेम था और इनका अल्फा सेम नहीं था. ये दोनों में फर्क समझा? ये दोनों में फर्क समझा? These are 2 SHMs. These are 2 SHPs. Amplitude not same, alpha not same, frequency same. Exactly उल्टा. Amplitude same, alpha same, frequency not same. अपना इसका आंसर आया था x is equal to r sin omega t plus alpha. याद आया? Right? Our argument was combination of 2 SHMs is SHM, where r is called resultant amplitude और अपना r का आंसर था root of
a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos of alpha 1 minus alpha 2। अपना फाइनल आंसर वो टर्म्स के टर्म्स में होता है जो सेम नहीं होते हैं। एम्पलीट्यूड सेम नहीं था, अल्फा सेम नहीं था, मतलब ये चार अलग अलग चीजें थी, तो वो चारों की चारों आएगी नहीं, बराबर। अल्फा क्या आया था, tan इनवर्स ऑफ a1 sin alpha 1 plus a2 sin alpha 2 upon a1 cos alpha 1 plus a2 cos alpha 2। This was memory recall of SHM। अभी मैं SHP की बात कर रहा हूँ। इसमें अपना रिजल्टेंट वेव क्या आएगा, ध्यान से सुनो। इसमें अपना रिजल्टेंट वेव आएगा, ये x था तो ये x था, ये y है तो ये y होगा। This is y is equal to r sin 2 pi ft, where r obviously is the resultant amplitude and this r is 2a cos of pi f1 minus f2t। इतना लंबा चौड़ा याद नहीं रहेगा, चलेगा, नो प्रॉब्लम। देखने का इसको बोलते हैं बिट फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं बिट फ्रीक्वेंसी, एंड देयरफॉर बिट पीरियड इज 1 अपॉन बिट फ्रीक्वेंसी। अभी बिट पीरियड ह्यूमन ब्रेन के लिए 1/10 ऑफ अ सेकेंड है, तो अगर बिट्स फॉर्म हुआ है, और अगर मुझे वो सुनाई देता है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी डिफरेंस हैज टू बी लेस देन 10 हर्ट्ज, because then only time period is more than 10 seconds, 1/10 of a second। अगर कोई चीज 1/10 of a second से स्लो मोशन में जाती है तो मुझे समझ में आती है, yes or no। So if the bits have to be heard, the frequency difference has to be less than 10 hertz। आप बिट्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स देख लो, फाइलिंग वाले, लोडिंग वाले, कुछ भी देख लो, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस वो लोग कैसे देंगे, they produce 4 bits per second, they produce 8 bits per second, they produce 2 bits per second, they produce no bits मतलब they are in unison। तो ये हमेशा ऐसा होगा। अब इसकी साउंडिंग कैसे आएगी, it will be in the form of loud sound and soft sound, it will be in the form of loud sound and soft sound। इसका मतलब सपोज, ध्यान से सुनो, ये प्रोड्यूस कैसे करते हैं। मैं एक पर्टिकुलर सेंटेंस बोलता हूं, यू आर गोइंग टू स्पीक द सेम सेंटेंस। अपना लाउडनेस सेम रहना चाहिए, लाउडनेस मतलब एम्पलीट्यूड सेम रहना चाहिए। मैं बोल रहा हूं, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तू बोल, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, बराबर, लाउडनेस सेम है। अभी मैं जो स्पीड में बोलूंगा, या तो तू उससे स्लो बोल, या तो तू उससे फास्ट बोल, तू डिसाइड कर क्या करेगा। फास्ट बोलेगा, ओके। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अच्छा, अभी हम लोग है ना वेव ट्रेन बोलेंगे, मैं ऐसे बोलते जाऊंगा, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। तू ऐसे बोलेगा, टू एवरी एक्शन देयर इज तू ऐसे बोलेगा, यू चूज टू बी फास्ट ना, राइट। अब जब ये दो वेव्स को मैं सुपरपोज करूंगा, कंप्यूटर पे साथ में डालूंगा, राइट, हम लोगों का एम्पलीट्यूड सेम है, लेकिन हम लोगों का पेस सेम नहीं है। मैं अगर एक सेंटेंस 2 सेकंड में खत्म करता हूँ तो ये 1.8 सेकंड्स में खत्म करता है। फिर मैं जब और एक सेंटेंस 2 सेकंड में खत्म करता हूँ, मतलब 2 sentences in 4 seconds, इसको 3.6 सेकंड्स लगेगा, मतलब हमारा टाइम पीरियड सेम नहीं है। तो इसका रिजल्टेंट इफेक्ट ब्रेन पे क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन अकॉर्डिंग टू loudness is varying and softness is same, and this will be heard at regular intervals of time. This will be heard at regular intervals of time. So this is phenomenon of bits, and bits is an example of interference in time। ये हो गया loudness, ये हो गया softness, और हम लोग अपना फाइनल आंसर ढूंढते हैं in terms of time या तो in terms of frequency। लेकिन अभी नेक्स्ट वाला पैटर्न देखो, ये 3 चैप्टर साथ में करना क्यों जरूरी होता है, समझ में आया? दे आर इंटरलिंक्ड, वेरी ब्यूटीफुली इंटरलिंक्ड। स्टेशनरी वेव्स में क्या होता है, ध्यान से देखो, 2 SHP वेव्स वापस, y1 is equal to a sin 2 pi t by t minus x by lambda, and y2 is equal to a sin 2 pi t by t plus x by lambda। इनका सब कुछ सेम है, इनका कुछ कुछ सेम नहीं था, कुछ कुछ सेम था, इनका कुछ कुछ सेम था, कुछ कुछ सेम नहीं था,
इनका सब कुछ सेम है, सिर्फ एक चीज डिफरेंट है, डायरेक्शन. दिस इज ट्रैवलिंग अलोंग वेरी गुड, दिस इज ट्रैवलिंग अलोंग. इधर अपना फाइनल आंसर आएगा y इज इक्वल टू r sin 2 pi ft. इसके जैसा ही दिखता है, बट ये r टाइम के टर्म्स में था, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस इन टाइम. और ये r स्पेस के टर्म्स में है. दिस r इज 2a cos of 2 pi x by lambda. मतलब मेरे r के इक्वेशन में x आया, right? So this is called interference in space. And over here the maxima are called antinodes and the minima are called nodes. मतलब जो पॉइंट्स पे r प्लस माइनस 2a होता है उसको एंटीनोड्स बोलते हैं, और जो पॉइंट पे r 0 होता है उसको नोड्स बोलते हैं. तो इसका मतलब ये होता है when is the first Xing heard, when is the first waning heard, और इसका मतलब होता है when is the first antinode observed and where is the first node observed, where. So what is this? Composition of two SHMs. What is this? Composition of two SHPs whose amplitudes are same, frequencies are not same, epochs are same. What is this? Interference in space whose amplitudes are same, frequencies are same, timings are same, wavelengths are same, wave velocities are same, everything same, directions not same. That means एक wave ऐसे गया और एक wave ऐसे आया. They interfere and you get this. Is that clear? What is the meaning of this? When is the first vexing heard? And what is the meaning of this? When is the first vexing heard? Can I say that is called beat period? So what is the time interval between a vexing and the immediate varying? It should be half of this. ये एक वैक्सिंग है, दो वैक्सिंग साथ में नहीं सुनाई देते कभी. इट इज ऑलवेज लाइक क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ, डे नाइट डे नाइट डे नाइट, यस नो यस नो यस नो, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, राइट. तो लाइकवाइज नो टू वैक्सिंग्स कैन बी हर्ड कंटिन्यूअसली, नो टू वेनिंग्स आल्सो कैन बी हर्ड कंटिन्यूअसली. तो दो वैक्सिंग्स के बीच का जो टाइम इंटरवल है दैट इज कॉल्ड डेल्टा टी. तो एक वैक्सिंग और एक वेनिंग के बीच का जो टाइम इंटरवल है शुड इट नॉट बी हाफ ऑफ दैट, राइट. लाइकवाइज इसका जो स्पेस इंटरवल है, स्पेस इंटरवल, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंटीनोड्स is calculated as lambda by 2. Distance between two consecutive nodes also is calculated as lambda by 2. Antinodes and nodes, they definitely come like this, definitely. So if this space interval is lambda by 2 and if this space interval also is lambda by 2, then what can you say about space interval between these two? Should it not be lambda by 2 ka half? That means lambda by 4. So what is distance between a node and the immediate antinode? Next या तो previous. Is it lambda by 4? Sure. Bits का मतलब समझा? Bits का फॉर्म होना और bits का सुनाई देना दोनों में फर्क है. ध्यान से सुनो. What is the condition for formation of bits? What is the condition for formation of bits? Frequency सेम नहीं होना चाहिए. अब मैंने दो ट्यूनिंग फॉक्स लिया, एक का फ्रीक्वेंसी 300 है और एक का फ्रीक्वेंसी 350 है. इसका मतलब डिफरेंस 50 है. तो कैन आई से बिट्स आर फॉर्म बट बिट्स आर नॉट हर्ड. बिट्स फॉर्म हुआ है लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है. क्यों? दिस इज 5 टाइम्स फास्टर देन व्हाट माय ब्रेन अंडरस्टैंड्स. इफ द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस इज 50, दैट मींस टाइम इज 1/50. My brain understands 1/10. That means this is 5 times faster than what my brain understands. मतलब ये फॉर्म तो हुआ है लेकिन मेरे दिमाग को समझ में नहीं आ रहा. Yes और मेरे खाने में बैक्टीरिया है, मुझे मालूम है. वो जब तक दिखता नहीं वो खाना खा लेता हूँ. सीधी सी बात है ना. अगर आपके खाने में फंगस आ गया, बैक्टीरिया, फूड पॉइजनिंग हो गया तो कोई जानबूझ के थोड़ी पॉइजन खाता है. वो आपको समझ में नहीं आता बिकॉज योर आईलैंड्स इज नॉट दैट पावरफुल, राइट. और हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप पहन के खाना नहीं खा सकते, तो खाना ही नहीं खा सकते. कुछ ना कुछ तो होता ही है. Are you getting my point? Moral of the story: bits are formed, but bits are not heard. So if bits have to be heard, can I say something like this should happen? मतलब ये difference 10 के अंदर होना चाहिए. Now the frequency difference is 6. That means time difference is 1/6. Am I right? So I can understand the bits also. That means bits are formed and bits are heard. It is not necessary that bits are formed so they are heard.
Bits may have been formed, but you may not understand this. It is faster than your brain. Got it? Sure? Okay. Are you on point number 21? पढ़ो ध्यान से. Point number 21. Bits. Point number 22. Already spoken about. Point number 22. Already spoken about. Point number 23. Already spoken about. फाइलिंग पे और लोडिंग पे क्या होता है सबको मालूम है? What happens when filing the prongs of the tuning fork? फाइलिंग का मतलब it's something like you are filing your nails, right? अब सपोज ये ट्यूनिंग फॉर्क लिया मैंने और इसके प्रॉन्ग्स को मैंने फाइल किया. आई एम डूइंग दिस. That means some little mass is removed by me. So when the mass is less, can you say frequency is more? So on filing the prongs of the tuning fork, frequency is increased. Loading मतलब ये already vibrate हो रहा था और अभी यहाँ पे मैं chewing gum चिपकाता हूँ या तो wax चिपकाता हूँ. That means am I putting extra mass on the prongs? So because it becomes heavy, can I say the frequency will decrease? Right? अभी filing और loading का मैं एक छोटा सा वीडियो भेजूंगा. 20 minutes का वीडियो है. The best of the question I have solved in that. और मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, लेकिन उसमें 10 टाइप्स कवर किए. बिफोर फाइलिंग व्हाट, आफ्टर फाइलिंग व्हाट, बिफोर लोडिंग व्हाट, आफ्टर लोडिंग व्हाट, ये 4 टाइप हो गया. अभी उसमें 2 सब टाइप्स है. क्या आप नॉन ट्यूनिंग फोर्क को फाइल कर रहे हो कि लोड कर रहे हो, कि अननोन ट्यूनिंग फोर्क को फाइल करके लोड कर रहे हो? तो वो 4 और हो गया. फिर और 2 टाइप है कि जिसमें बिफोर फाइलिंग एंड आफ्टर फाइलिंग द नंबर ऑफ बिट्स रिमेन द सेम. राइट? आप लोग वो वीडियो देखोगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करके बताऊंगा. बिकॉज फाइलिंग लोडिंग में ना स्टूडेंट्स कभी कभी थोड़े स्ट्रगल करते हैं कि जो फाइलिंग लोडिंग का सम कैसे करने का नहीं आता है. सो टुडे व्हेन द लेक्चर इज ओवर, अब भी मैंने जूनियर बैच में अब भी ये लेक्चर लिया है, शायद 1 आध महीने पहले. 20 मिनट का वीडियो है सिर्फ, लेकिन वो प्रॉब्लम एकदम ध्यान से देखना. Okay, so you will understand any problem on filing and loading, any damn problem. क्या स्टाइल में वो सॉल्व करने का, क्या स्टाइल में लिखने का, how to crack it very fast, everything I have covered. Point number 24 समझा सबको? On filing what happens? You are making the prongs little lighter, so they vibrate more number of times. So on filing the prongs, the frequency increases. Point number 24 टिक करो. On loading the prongs, frequency decreases. अब ये जो नीचे A और B लिखा हुआ है ना, उसके बाजू में लिखो वॉच द वीडियो ऑफ फाइलिंग एंड लोडिंग ऑफ 20 मिनट्स. ये बिल्कुल भी इग्नोर मत करना. ये कुछ महान आत्मा ऐसे जो इंस्टॉलमेंट में आती है ना, कभी आए कभी नहीं आए, कभी बीमार हो गया, उनका सेकेंड अटेम्प्ट भी फेल ही जाने वाला है. अपने को ये सब नहीं देखना है लाइफ में. सो प्लीज बी वेरी सीरियस अबाउट योर करियर, है ना. कुछ स्टूडेंट्स रेगुलरली इरेगुलर होते हैं. मैं 1-2 बार पेरेंट्स को फोन कर रहा था कि वाई योर चाइल्ड वाज एब्सेंट. मुझे एक ही आंसर मिलता है, मैं चाइल्ड वाज नॉट कीपिंग दैट. बाद में मैं गॉड ब्लेस यू करके छोड़ देता हूँ, है ना. तुम लोगों के बैच में तो एक्चुअली अटेंडेंस का सिस्टम ही नहीं होना चाहिए. तुम लोगों के बैच में अटेंडेंस क्यों लेने का बॉस? आग लगी अपने दिल में यार. मेडिकल का आपने एडमिशन गया, 1 साल गया अपना, अभी तो क्रैक करना ही है कुछ भी करके. तो यू हैव टू बी वेरी सीरियस इन दैट, वेरी वेरी सीरियस. अपॉर्चुनिटी 1 बार 2 बार मिलेगा, बार नहीं मिलेगा. तो इसके लिए वीडियो देखो. डॉपलर इफेक्ट कैंसिल करो, वो आप लोगों के लिए नहीं है. पेज H86 का नीचे का पार्ट कट करो. पेज H87 पूरा का पूरा कट करो. राइट? मुझे नहीं लग रहा है पेज H88 में आप लोगों को मेरी जरूरत है. यू आर अवेयर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क. व्हाट आर दिस कॉल्ड? prongs. What is this? Is called stem. This is called free end. This is called free end. तो free end पे हमेशा एंटी नोड फॉर्म होता है. डायग्राम देखो, डायग्राम में यहाँ पे एंटी नोड फॉर्म हुआ है, यहाँ पे एंटी नोड फॉर्म हुआ है. ये भी फ्री एंड है, यहाँ पे भी एंटी नोड फॉर्म हुआ है. ये भी फ्री एंड है, यहाँ पे भी एंटी नोड फॉर्म हुआ है.
You know that no two antinodes can ever come together. दो एंटीनोड के बीच में एक नोड होना ही चाहिए, तो दो एंटीनोड के बीच में एक नोड होगा ही होगा, चेक करो। मतलब जब साइंटिस्ट लोग ये स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, सोचो ये कितना मेटिकुलेट होगा। दिस इज यूज्ड इन ऑडियो थेरेपी, दिस इज यूज्ड इन स्पीच थेरेपी, पैरामेडिकल साइंस, राइट। मुझे बराबर से सुनाई नहीं देता है, अभी डॉक्टर मुझे ऐसे चेक करेगा और फिर मुझे ऐसे चेक करेगा, फिर मुझे ऐसे चेक करेगा। ये तीनों में फीलिंग अलग है, देखो, है ना। ट्राई करना है सेट ऑफ ट्रेनिंग फॉर इधर ही, ऐसा करके ऐसा करने का, राइट। तो डॉक्टर विल फाइंड आउट कि मेरे टिम्पैनम बोन में प्रॉब्लम है कि मेरे ऑडिटरी नर्व में प्रॉब्लम, मतलब मेरा नॉर्मल एक्सटर्नल मेडिसिन से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कि मुझे ऑपरेशन कराना पड़ेगा। सो मेटिकुलसली दिस इज यूज्ड, राइट। मतलब एक साउंड प्रूफ कैबिन होगा, डॉक्टर बाहर बैठे होंगे और आपको इशारा करके बोल रहा है कि आपको ये फ्रीक्वेंसी समझ में आया कि नहीं, राइट। आप बोलोगे यस, पानी शिफ्ट हो जाएगा, ओके। बाद में दूसरा ट्रेनिंग कोड देगा, आपको यस करना है, राइट। बाद में एक पे आप श्योर नहीं थे तो आपने ऐसे किया, मतलब आई एम नॉट श्योर, शायद मुझे सुनाई देता है, शायद मुझे नहीं सुनाई देता। बाद में फ्रीक्वेंसी आप बोलोगे आपको नहीं सुनाई देता है, तो डॉक्टर्स विल जज कि आपको कौन से फ्रीक्वेंसीज के साथ प्रॉब्लम है, राइट। सच अ मेटिकुलस साइंस। आपका थ्रोट बॉक्स गया सपोज, इसमें कोई प्रॉब्लम आया, देन योर वोकल कॉर्ड्स आर आल्सो रिपेयर्ड लाइक दिस। ENT सर्जरी में ये पूरा का पूरा भर के यूज होता है। समटाइम्स स्टूडेंट्स आज की सर केमिस्ट्री और बायो पढ़ने तो इम्पोर्टेंट है, मेडिकल में फिजिक्स की क्या जरूरत है। इफ यू डोंट नो फिजिक्स दैट मींस दैट यू कैन नॉट बिकम डॉक्टर। डॉक्टर आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, स्टेथोस्कोप, उधर ही फिजिक्स को शुरू होता है। नेक्स्ट क्या होता है, स्फिग्मोमेनोमीटर, उधर फिजिक्स है। बाद में क्या होता है, इकोकार्डियोग्राम, एक्सरे, सब जगह पे फिजिक्स। आर यू गेटिंग दिस? पॉइंट नंबर 28 टिक करो, 29 अपना ऑलरेडी हो चुका है, 30 हो चुका है, 31 पढ़ो जरा। If the medium remains the same, that means velocity remains the same. That means frequency and wavelength का product remains the same. That means frequency is inversely proportional to lambda. But if the medium changes, then frequency remains constant, and therefore the ratio V by lambda will remain constant. Thereafter you know this. Intensity का ratio is amplitude का ratio का square. Then you know constructive interference and destructive interference. Constructive मतलब I max, destructive मतलब I mean. I max मतलब amplitudes add करो, I mean मतलब subtract करो. So I max upon I mean is A1 plus A2 upon A1 minus A2 the whole square. Chapter number 2 over. Chapter number 3 में मैं first page पे stop करूँगा. We will have to split up this in 2 parts because इसका जो स्ट्रिंग वाला पार्ट है, ओपन वाला पार्ट, ओपन पाइप एंड क्लोज पाइप, मेल्डिस एक्सपेरिमेंट, रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, सोनोमीटर बॉक्स, राइट, देयर different experiments have got different answers, so you have to be very alert. Point number 1 हो गया अपना, चेक करो। Point number 1, right side of the board, how stationary waves are formed. Nodes हो गया, nodes। अभी जो पॉइंट नंबर 4 है ना, नोड्स, उसको एक स्पेशल नाम दे दो, दे आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट नोड्स। खाली नोड्स मतलब डिस्प्लेसमेंट नोड्स, खाली नोड्स एंटी नोड्स मतलब डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड्स। अब एकदम ध्यान से सुनो, जो डिस्प्लेसमेंट नोड्स है ना, उसको प्रेशर एंटी नोड्स भी बोलते हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड्स है उसको प्रेशर नोड्स भी बोलते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई। डिस्प्लेसमेंट नोड्स का मतलब क्या, resultant amplitude is 0. That means the particles are very crowded. They don't get chance to scatter up. So when the particles are very crowded, they exert tremendous pressure on each other. Displacement antinode में the particles are scattered, well scattered. They are away from each other. So they exert the least pressure. So the word node means minimum, antinodes means maximum. जहाँ पे displacement minimum है वहाँ पे pressure maximum है, जहाँ पे displacement maximum है वहाँ पे pressure minimum है. That means displacement nodes are also called pressure antinodes, and displacement antinodes are also called pressure nodes. Have you understood this? Yes. Point numbers 4, 5, 6, 7 done. 2 done. Are you on point number 8? ध्यान से देखो, साउंड वेव्स में करवाया मैंने, नोट,
tone, tonic, fundamental, overtones. Point number 8 का. Point number 9 से मैं कंटिन्यू करूँगा. Mostly I will meet you on Tuesday itself. 99% टाइम टेबल संडे को डिसाइड होगा. Without fail, get all this. Now, frankly speaking, I have got 2 practice papers ready. Stationary waves भले मैंने शुरू नहीं किया है, लेकिन बाकी का तो क्वेश्चंस क्रैक करो, है ना? थोड़ा टाइम से होगा. जिधर जिधर स्टेशनरी वर्ड आता है, जिधर जिधर ओपन पाइप वर्ड आता है, क्लोज पाइप वर्ड आता है, सोनोमीटर बॉक्स आता है, मेल्डिस एक्सपेरिमेंट आता है, राइट, एंटीनोड नोड वर्ड आता है, वो क्वेश्चन छोड़ दो ट्यूसडे के लिए, बाकी के सॉल्व करो. आई एम गिविंग यू 2 पेपर्स टुडे. One is having 60 MCQs, another is having 45 MCQs. अब 45 MCQs मैंने टेस्ट के लिए रखा था, बट ठीक है, टेस्ट के लिए मैं नया पेपर बना दूंगा, तो मैं वो 45 MCQs का आप लोगों को की भी देता हूँ, so you can cross check your answers, है ना? जो 60 MCQs का पेपर है उसका नीचे की दिया हुआ है. जो 45 MCQs का पेपर है वो मेरा एग्जाम पेपर था, बट उसको मैं अभी प्रैक्टिस पेपर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो उसका भी मैं की दे देता हूँ. एक पेज में अभी भेजता हूँ प्रिंटिंग में, वो आप उसका की लेते जाओ. Right? 99.99% I will meet you on Tuesday. If not Tuesday, Friday. But I will try if I can take Tuesday and Friday both. Advantage? एक बहुत ही बड़ा सेक्शन खत्म हो जाएगा. Understood the lecture of the day? I'm sure काफी सारी चीजें नहीं सुनी होगी. Particularly जो मेरे बच्चे थे लास्ट ईयर, उन्होंने तो सुना ही है ये सब. जो नए बच्चे उन्होंने काफी कुछ नया सुना होगा. We stop here for the day.